Exercise 1.2, question number first, state whether the following statements are true or false and justify also. First statement is every irrational number is a real. So yes, every irrational number is a real because every irrational number is a part of real number. In the first part of that video, I already explained through a flow chart that real number classified into two parts. Real number categorized into two parts, rational number and irrational number. So the statement is every irrational number is a real. So yes, it's true because every irrational number are part of real number. सारे के सारे irrational number real number के तो part है. तो हर एक irrational number real number ही होंगे ना. So first statement is true. Clear? The second statement is every point on the number line is of the form of under root m where m is any natural number. हर एक नंबर अंडर रूट के फॉर्म में नंबर लाइन पर नहीं होता है. ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नेक्स्ट, every real number is an irrational number. Every real number is an irrational number. So false because real number categorized into two parts, rational number and irrational number. Statement is every real number is an irrational number. तो ऐसा नहीं है, रियल नंबर में से कुछ रियल नंबर रैशनल नंबर भी तो है. और स्टेटमेंट saying that every real number is an irrational number. So it is false. सारे रियल नंबर इरेशनल थोड़ी है, कुछ रियल नंबर रैशनल नंबर भी तो है. So that's why this statement is false. Third statement is false. Clear? Question number 2 of this exercise. The question number 2 is, are the square root of all positive integer irrational number? If not, give an example of the square root of number that is a rational number. The question is, are the square root of all positive number irrational number? हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर है. नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? देखो, question number 2 solution. The square root of every positive number means square root of 1, square root of 2, square root of 3, square root of 4, square root of 5, square root of 6 and so on. Statement is saying that the square root of every positive number is an irrational number. So we can check. What is the square root of 1? 1. Square root of 2, 1.414. Square root of 3, 1.732 and और भी आगे नंबर्स हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डेसिमल में, 6 डेसिमल में है. स्टेटमेंट का कहना है कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव नंबर इज एन इरेशनल नंबर. सो देखिए, ये इरेशनल नंबर नहीं है. हाँ, यस, इट इज इरेशनल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर. अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज आल्सो नॉट इरेशनल नंबर. 3 not irrational number. So it's false. This is the explanation or justification that the square root of all positive number is not an irrational number. Okay, clear? Next question. Under root 5. Suppose it is a right angle triangle ABC. Right angle at B. Opposite of right angle always hypotenuse. It is perpendicular. Here is base. Perpendicular आपको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन में परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही लेना है. कोशिश करें कि 1 यूनिट ही लें आप हर एक क्वेश्चन में. बेस आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन पर. बेस की वैल्यू आपको ऐसे लेना है जिसको पुट करने से और सॉल्व करने पर अंडर रूट 5 आ जाए. सो हियर वी विल टेक बेस 2 यूनिट. इसको आपको लेना है 2 यूनिट. इफ यू सॉल्व यू विल गेट अंडर रूट 5. ठीक है, देखो चेक कर लेते हैं यहाँ पर. हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. 1 स्क्वायर प्लस 2 square, 1 plus 4, that means 5. That means hypotenuse value is square root of 5. Clear है? Now representation of number line. Yes. Draw a line
0, 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 यूनिट। देखिए यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर ऑल्सो, मीटर ऑल्सो, इंच, जैसा भी आपको सुटेबल लगे। 2 यूनिट पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑफ 1 यूनिट। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, give a point name C, suppose here is A, this is B and C. AB is a base which is 2 unit, join A to C, this is hypotenuse opposite of right angle, under root 5. After that take radius AC. After taking radius AC with the help of your compass, put your compass at point A, through A radius under root 5 AC, cut an arc. This arc, ये arc number line को एक point पर cut कर रहा है. This point is showing under root 5. This is the representation of under root 5 और number line. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Clear? Steps. So steps आप जैसा हमने representation दिया जो किया है वैसे steps. जैसे first step आप लिख दीजिए. At first we will draw a number line and we take an initial point A. Then at 2 unit we will take a point B. Through this B we draw perpendicular of 1 unit. We will join C to A. After joining we take a radius AC and through A we cut an arc. ठीक है, so जहां पर भी आर्क कट कर रहा है, this point will be this point showing the under root 5. Representation of under root 5, इसको आप स्पाइरल के थ्रू भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसकी सेकंड मेथड आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ड्रॉ लाइन, टेक इनिशियल पॉइंट ए 1 यूनिट, take B point at 1 unit from A, draw perpendicular of 1 unit, join A and C both, these both are 1 unit. If you solve by PCT you will get here under root 2. After that you just draw one more perpendicular through C of 1 unit and join this point to A, you will get under root 3. Similarly so on. मतलब कि आप एक एक स्टेप बढ़ाकर भी आप कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अंडर रूट 4 मिलेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप और बढ़ा देंगे तो आपको अंडर रूट 5 मिल जाएगा. ठीक है, तो अंडर रूट 5 जैसे लास्ट वाली स्टेप आती है, इसको आप जैसे रिप्रेजेंटेशन या अर्क कट करेंगे नंबर लाइन पर, वो अर्क आपको जहां टच करेगा वो अंडर रूट 5 होगा. इसको बोलते हैं स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज about square root spiral. Question number 4, square root spiral. Square root spiral. ठीक है, स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है. ड्रॉ a number line. Take an initial point A, take point B on 1 unit, draw a perpendicular through B of 1 unit, then join this both the points. Suppose this is C. If you use PCT, then you will get here under root 2. It is the first step. Next, through C, draw one more perpendicular of 1 unit, give point name D, join D to A, you will get under root 3 here by using PCT. Here is 90 degree. Okay, once again you draw perpendicular by the help of compass. Okay, point name suppose E, join E to A. If you use PCT then you will get hypotenuse under root 4. Similarly you have to do this activity in successive order. तो ऐसे इसको एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है. So you will get a spiral, square root spiral. यही this is known as the square root spiral. इसके 2-3 स्टेप और बढ़ा देना आप. ठीक है.